Probably because you're trying to learn it the normal way. That is, open YouTube, search Blender's tutorial, and immediately get overwhelmed. Or maybe you tried the other normal way. वैसे ये बात इससे ठीक कही है, आप जब भी YouTube ओपन करते हैं और ट्यूटोरियल सर्च करते हैं आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल केस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्रोफेशनल्स और बहुत ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं यूट्यूब पर। आप जब भी नॉर्मल वे में जाते हैं तो आप ओवरवेल्म ज़रूर होंगे, और मेरे साथ ये हो चुका है, क्योंकि मैं 2-3-4 ट्यूटोरियल्स चेक किए, बहुत हार्ड थे। फिर मैं नॉर्मल बहुत ही लोग मतलब मैं सर्च किया बहुत ही इजी मोड, तो छोटी छोटी चीज़ों से मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखूँ। बट ओवरऑल अगर एक बंदा कहे कि ट्यूटोरियल से आप जब भी चलाते हैं ट्यूटोरियल और जैसे ही शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि बहुत जो है ना वो बंदा ओवरवेल्म हो जाता है, बहुत मुश्किल चीज़ें आती हैं, और इसी वजह से बंदा सही से सीख भी नहीं सकता। मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट। ब्लेंडर ट्यूटोरियल सर्च करते हैं जी, क्या निकलता है। देखते हैं जी। वैसे ये देखिए यार, बहुत मुश्किल आ रहे हैं, कोई ईजी नहीं आएगा आपके पास। तो बहुत ज़्यादा भी हैं, आपने समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तो चलो देखते हैं यार ये क्या बंदा बोलता है, क्योंकि स्मीफ जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। आपने अगर इसको फॉलो अप नहीं किया हुआ तो ज़रूर फॉलो अप करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब इसको कर दें और फॉलो अप कर दें। That is, go to college, do the work, get the degree. That's normal. I did it too. This is me receiving my Bachelor of Animation and 3D Modeling. 3 years of work, 9 long trimesters. I was a quote-unquote 3D pro. But then I go to Blender and I try to animate a character, and I realize I literally don't know how to animate a character. ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, जो भी हमने स्टडी किया था, मैं कंप्यूटर साइंस में स्टडी किया था, तो मुझे नहीं पता मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कौन सी डिग्री आई मेरे पास, कुछ भी अभी तक आइडिया नहीं है कि हमने किया क्या है क्या नहीं किया। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। तो ऐसा ही है सबके साथ, जो भी एजुकेशन लेते हैं सब कुछ करते हैं, जब रियल टाइम काम करने का आता है तो हमें कुछ पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या करना है क्या नहीं करना। This normal way to learning 3D is broken. Not only broken, it doesn't work. But what if there was a different way? A complete guide personalized for you that, if followed, will actually make you a 3D pro in Blender. Well, there is. And it's called the SET framework. This is the exact blueprint that I would follow if I was starting completely from scratch with 3D. It'll take you from noob to pro, and it's what 99% of people miss when starting with Blender. So let's break these levels down one at a time. Level 1, Select. This level is all about creating the foundation of a pro, building your base before even starting Blender. If you have no knowledge of 3D, there's no way that this is going to make any sense to you. It's kind of like your first day in Skyrim. Hear me out. In Skyrim, you start off with a backstory. Finally awake. You get to spend time building out your character, and straight after that, you're thrown into chaos. For Blender, it's basically the same path. फर्स्ट टाइम जब मैंने स्काईरिम खेली थी तो ऐसा ही हुआ था। मैंने तकरीबन 1 घंटा लगाया कैरेक्टर कस्टमाइजेशन पे। जैसे ही गेम में गए तो सब कुछ ब्लास्ट हो रहा है जी, भागो जी, इधर से उधर मार रहा है, किडनैपिंग हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। Except there's बट गेम अच्छी थी यार, कुछ भी कहो। स्काईरिम स्टिल और फेवरेट गेम, और बहुत अच्छी गेम है, और ओल्ड डेज़ की याद दिलाती है जब भी मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ। अब भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग खेलते हैं इसको। आप ट्विच पे जाएंगे तो स्काईरिम को काफ़ी ज़्यादा लोग खेल रहे होंगे। It's still enjoyable. 2 crucial steps missing: backstory and character. Without these, you literally can't navigate the chaos. By definition, it's complete disorder and confusion. This is why step 1 is arguably the most important step in the entire blueprint. And that is step 1. Why Blender? Why do you want to learn Blender? Seriously, what? Why? क्योंकि यार अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है, 3D डिज़ाइनिंग करनी है,
तभी सीख रहे हैं और यही वजह है कि ब्लेंडर और वैसे भी ओपन सोर्स है और आप इससे सिर्फ ब्लेंडर से आप और भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं जैसा कि अनरियल इंजन माया और सिनेमा 4D। आपने अगर ब्लेंडर में एनिमेट या डिज़ाइन कर सकते हैं तो आप बाकी सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। तो एनिमेशन मैं खुद क्यों सीख रहा हूँ इज़ जस्ट माई ओन पर्सनल गिग के यार आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखते रहना है और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखती रहनी है क्योंकि विदाउट चैलेंजेस यू विल नॉट डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। चैलेंजेस नहीं है, वीडियो एडिटिंग में करता हूँ, फ्रीलांसिंग में, पर चैलेंजेस नहीं है। तो वही कुछ न्यू टेक्निक्स न्यू चीज़ें सीखने के लिए आई एम लर्निंग ब्लेंडर क्योंकि आप जब 3D मॉडल 3D डिज़ाइंस करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा पता चलती हैं। वीडियो एडिटिंग में आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग। For some people, it's, I want to learn 3D for game dev. I want to earn some side income with 3D. I want to make VFX for movies. I want to be a lizard and become Dragonborn. Whatever it is, figuring this out before touching Blender will ultimately set you up for success. Without your why, Yes. there's no strong reason for you to do the thing, which leaves you with two options. You'll either fail to learn Blender, or worse, you won't even pick it up to begin with. The reason I'm Yes. telling you this is ये because वैसे सही कहा इसने। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपका गोल सेट होना चाहिए कि आप क्यों लर्न कर रहे हैं। और फॉर मी इट्स जस्ट फॉर यू नो लाइक टू गेन समथिंग एक्स्ट्रा। मैं इसलिए नहीं सीख रहा कि आई वांट टू मेक अ गेम, आई वांट टू अर्न फ्रॉम इट। नो, आई जस्ट वांट टू मेक माई वीडियो एडिटिंग स्किल्स ऑन टू अनदर लेवल और कुछ न्यू टेक्निक सीखना चाहता हूँ क्योंकि 3D आप जब अभी टाइम ऐसा है कि देयर आर AIs हु कैन क्रिएट वीडियोस और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी वीडियो एडिटिंग में आपको काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो हाउ कैन यू जंप फ्रॉम बेसिक वीडियो एडिटिंग टू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। 3D इज़ वन ऑफ देम और आप 3D को यूज़ करके काफ़ी कूल चीज़ें बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। या choosing your why is crucial. But thankfully, it's so easy to do when we utilize the way system. It takes 3 steps. Here's how you do it. Step 1, wonder. This step is about exploring what got you interested in 3D. Maybe you saw some cool motion graphics, or maybe a sweet animation on the big screen. Whatever it is, Yes. find what inspired you and use this time to document that. For example, my inspiration was mostly video games. I'm talking Blink's the Time Sweeper, Jet Set Radio Future, and of course, Don't say it. Skyrim. Once you've gathered all your inspiration, put it into a folder or a mood board, somewhere easily accessible, because we're going to need it for step 2. Analyze. Now I'd want to look over each of my inspirations and start asking myself, what do I think I want to pursue from these? Maybe I really like the cel-shaded textures from Jet Set Radio. Or maybe I'd want to learn about environment art from Skyrim. Take some time on this step and really dig into what jumps out to you. It may only be 2 or 3 things. That's totally fine. Just note them down and put them to the side because now we're going to combine these with step 3, yield. With both of these equations solved, we basically know our why. We just got to dig it out. And the easiest way to do that is with this. It's a circle. But when you put 2 of these together, with the exploration in one and the assessment in the other, something magical happens when you start to combine them. The middle starts to overlap, and the reason, or your why for Blender, becomes crystal clear. There's so many ideas that start popping out of this thing, and you really only need one that resonates with you. To make it super clear, you can copy this sentence structure to help figure out your why. I'm not gonna lie, this is probably the hardest part of the blueprint. Not to say that it's hard, it's actually super easy. But nobody does this. And simply by choosing something, anything, you're gonna be leagues ahead of everyone else. I mean, I had this one guy that was like, I wanna make Minecraft thumbnails so my videos perform better. But having your why is only half of the puzzle. There's still one major piece that, when connected, will skyrocket our progress for learning Blender. So
There you go. What is it? Step 2, domain. Having your reason why for Blender is amazing, but choosing ये डोमेन एक्सपेंशन तो नहीं आ रहा कि हम डोमेन एक्सपेंशन में जा रहे हैं जुजुत्सु कैसन में. your domain is what will set you apart from the average person. We don't want to jump into the chaos of learning Blender because what would we learn? There's no direction yet. Having a domain first is so important. Yeah. And a lot of people just skip this step entirely, which actually causes them to fall into the biggest trap when learning Blender. It looks like this. Everyone starts their journey here at rock bottom, knowing nothing about Blender. Then they jump into the chaos, thinking, yeah, I'll learn modeling. They follow some tutorials, learn the basics, and their confidence is sky high. Yeah. They think they know it all, but as time goes on, they learn new concepts like sub-D modeling, edge flow, topology, hard surface. This overwhelming amount of new knowledge kicks them down here to what's called the Valley of Despair. This is the trap. This is where most people एक्चुअली मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ. दिस हैपन विद मी. जब मैं अनरियल इंजन में कुछ काम कर रहा था और मैंने क्विट भी उसको तभी किया था क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट. और वो बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शन से और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो मैं लर्न नहीं कर सका और मैंने उसको क्विट कर दिया. इट वाज लाइक इन 2020 2021. और उसके बाद मैंने फिर 3D मॉडलिंग को और 3D डिज़ाइनिंग को टच ही नहीं किया. द रीज़न वाज बिकॉज आई वाज गेटिंग ओवरवेल्म. और जो मैंने ट्यूटोरियल्स शुरू में जो फॉलो अप किए वो बहुत बेटर थे. मतलब इजी मैंने फॉलो अप किया बट अगेन व्हेन आई एक्सप्लोर मोर थिंग्स आई जस्ट गॉट into this despair क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक बार ही मिले. आप जब एक डिज़ाइन बनाते हो, कल मैंने एक डिज़ाइन बनाया. लेट मी शो यू समथिंग. मैं वैसे ब्लेंडर में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ. ये मैंने कल शॉर्ट बनाई वैसे. दिस इज़ अ फ्री टाइम वर्क सो आई एम नॉट गोइंग ओवरबोर्ड विद दिस लर्निंग बिकॉज ये मैंने चीज़ सीख लिया कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक बार नहीं लेनी. आप स्टार्ट भी आराम से करो, शुरू में थोड़ा इजी स्टेप्स लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके और फिर उसके बाद आराम से आगे जाते जाओ. क्योंकि आपने एकदम से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, आप क्विट कर दोगे. और मैंने ऐसा ट्राई करके देखा है तो ये इसका स्टेप बहुत ही अच्छा था. ये जो इसने अभी बोला, give up, or worse yet, start the cycle again. They say, oh, it's too hard. I need something easier. Let me try animation. Okay, so they start again. They jump into the chaos, learn the basics, learn the not so basics, and wind up exactly where they left off. This happens over and over again, which ultimately makes zero progress to the thing they actually wanted to do to begin with. So, that's why he asked us to write down our motive behind why we want to learn Blender. क्योंकि आपको जब मोटिव आपको पता होता है तो आप उसके मुताबिक काम करते हैं. For me, it's like I want to build environments. I don't want to go in multi-complex animations. I don't want to go in that kind of thing. But मेरा जो खुद का मोटिव है एक अच्छे जो है वो डिज़ाइंस बनाना मैं अपनी वीडियो के लिए. और मेरा जो मोटिव है वो मुझे बहुत क्लियर है इस टाइम क्योंकि I don't want to waste my time in 3D learning क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता जो चीज़ें मैंने सीखनी नहीं है, जो मेरे काम की नहीं है. जैसा कि एनिमेशंस, 3D एनिमेशंस. क्योंकि बेसिक्स तो मुझे आने चाहिए क्योंकि बेसिक्स फिर भी यूज़ होंगे. बट other than that I will not go in depth with animations. just environment बनाना और उनको वीडियो एडिटिंग में यूटिलाइज करना. दिस इज़ माई मेन मोटिव. और कुछ मॉडल्स बनाना जो मैं खुद मॉडल्स बना सकूँ, ऐसे मॉडल्स जो मेरी वीडियो एडिटिंग में जैसे ग्रीन स्क्रीन में यूज़ करता हूँ तो उसमें यूज़ हो सके. और मैं अपनी वीडियो एडिटिंग में यही चीज़ एक लेने के कोशिश कर रहा हूँ कि आई वांट टू बी 3D वीडियो एडिटर. और इसमें ये होगा कि आपकी रियल वीडियो एडिटिंग 3D इन्वायरमेंट में आपकी जो है वो मर्ज कर जाए. तो
ये मैं अपनी फील्ड रखना चाहता हूँ और एज अ फ्रीलांसर मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग 3D। और आपको भी ये चीज़, इसने भी बहुत अच्छा पॉइंट ये नोट आउट किया है कि if you don't have a specific needs, you will get into despair, because आपकी specific need ही नहीं है, आपका एक motive ही नहीं है जिसको आपने follow up करना है, तो वो चीज़ें आप नहीं सीख सकते जो आपने सीखनी चाहिए या फिर वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि there are many things, VFX, animations, मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग, फिर स्कल्पचिंग, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें, इन्वायरमेंट क्रिएशन, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। आप एक चीज़ में रहें तो बेहतर होगा, इसका कहने का मतलब ये है। So, How yeah. do we fix this? How do we climb out of this hole and stop the cycle? Well, it all comes back to the title of this step, choosing your domain. Okay, but like, what is a domain? You keep saying the word domain, but what the fuck does it mean? What? Remember Skyrim? Oh my god. We've got the backstory, but now we need to choose who we want to be. We need to select our character. In Skyrim, there's 10 playable characters, all with specialized skills and abilities. Maybe you want to be a Khajiit, maybe a lizard. Each one has pros and cons, but selecting any one of these will change the way you play the entire game. It's the same for Yes. Blender. And these characters Same. kind of represent the 10 major domains of 3D. Lighting, animation, modeling. You get the idea. Selecting one of these major skills will not only tell you what you want to learn, but more importantly, what you need to learn. This is also known as choosing your niche. Okay, but how do I figure out my niche? We haven't even touched Blender yet. I know, we're about to. And the quickest way to selecting your niche is by using the map method. It looks like this, and it starts at the top with stage 1, muster. Here we want to find all our बॉटम से शुरू नहीं होना चाहिए, but okay. inspiration and dump it into this theoretical bucket. And if you followed step 1 of this blueprint, this part should be super easy. The top level holds everything we find interesting about 3D. Nothing's filtered out yet, until we open the gates to stage 2, assess. We want to now identify all the tools and skills used for each piece of inspiration. For example, Blink's the Time Sweeper. This is my childhood game, and there's so many skills that bring this thing to life, like modeling, texturing, and animation. But we're not choosing any of these yet. We just want to figure out what skill excites us the most and filter out the rest. And we do this by opening the final gate to stage 3, plot. With your why statement at the ready, we want to match all these different skills to it. If any of them don't align with this sentence, get rid of it. And once you do this exercise, the bottom of the bucket will open up, and one domain, your niche, will basically be chosen for you. This process is so powerful. It simplifies the selection of your niche, and better yet, completely यस, क्योंकि आपने सबसे पहले, क्योंकि अभी आपने शायद ये आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू। जैसा कि इसने पहले कहा कि आपने जो है वो ब्लेंडर क्यों यूज़ करना चाहते हैं, वाई यूज़ ब्लेंडर, आपने सोचना है क्यों यूज़ करना चाहते हैं, आप क्यों ये सॉफ्टवेयर या कोई भी इस तरह का रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपने इसको राइट डाउन करना है, इसका आंसर आपने लिखना है। दूसरे में इसने पूछा कि आपने क्या चीज़ आपको इंस्पायर कर रही है कि आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है ना, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपने किस चीज़ की तरफ जाना है। आप अपनी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो चाहे अपनी इस लेवल की सी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, आपने सिंपल नोट डाउन करना है सब कुछ। तीसरी चीज़ उसने पूछी है कि आपने जो है वो क्या बेसिक चीज़ आपने क्या सीखनी है, ठीक है ना, मतलब आपने पहले आपने क्वेश्चन ये किया है कि आप सीखना क्यों चाहते हैं, दूसरा आपकी इंस्पायरेशन क्या है, तीसरा आपने चीज़ क्या सीखनी है। मीन्स कि आपने अगर सिर्फ एनिमेशंस बनाने हैं तो यू हैव यू गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम मूवीज़, मे बी एवेंजर्स, और आप चाहते हैं कि आप जो है वो 3D मॉडल्स में एनिमेशन VFX बना सकें, तो दैट्स योर इंस्पायरेशन। बट ये एक सिंपल 3 क्वेश्चंस आपने राइट डाउन करने हैं, उनको जो है वो आंसर करना है, आपकी नीश आपके सामने आ जाएगी।
इट्स वेरी सिंपल और वेरी उसने बहुत ही अच्छे एनिमेशन और डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है और शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए थे बट इफ़ यू मिस दीज क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया. Completely destroys this trap that a lot of beginners fall into. But having both of these puzzle pieces is kind of meaningless if we don't actually apply it to the final step Yes. of level 1. And that is step 3, quest. Now that the puzzle is complete, we need to look at the overall picture and ask ourselves the simplest question. What do I actually see? I've got my reason why, I've got my niche, but what does this actually form when put together? The overall puzzle picture is and should be blurry. So how do we focus it? Well, it's honestly way easier if I just... No, don't do it. Just do anything else. Anything else, please, for Not the love of Skyrim. God. In Skyrim, there's one ultimate mainline quest. Become Dragonborn. As you progress through the first few quests, you learn that you're this super rare person that can absorb dragon souls and literally cast magic by shouting. As time goes on, you realize becoming Dragonborn isn't actually your quest. The main quest, the pinnacle of the entire game, is to stop the world from being eaten by a dragon. The reason I'm telling you this is because the blurry puzzle pieces are actually just a blank map. And to make sense of it, we need to plot out our quests, or in other words, choose our goals. Without goals, there's no real path for us to follow. And if we jump into the chaos now, we don't know where to go. Like, we've got a pretty good idea, but there's no heads-up display, no quests. We're basically an NPC waiting for some kind of action. I'm supposed to be looking. So, how do we figure this out? Like, what's the best way to set our goals? Well, there's two options to doing this, and honestly, we already have a super solid foundation. I mean, 99% of people don't even have the map to begin with. The first option Yes, looks like that's this, exactly and there's 5 stages. Stage 1, define. Here, we just want to set up a list of clear and specific goals. And since we already have the thing we want to learn, the skill we want to pursue, and the reason why, this part is so easy. I'd recommend making 5 goals to start with. And the main key is to actually write them down. None of these notion lists. You can be as bold or as vulnerable as you want. Like, this isn't something you're going to show anyone, okay? Unless you leave it lying around like in Skyrim. Oh, what is this? Stage 2, why? Ask yourself Oh my why God. you want to achieve these goals. Yes, guys, Here's just a few questions to help you figure it out. The reason is most likely going to be very similar to your main reason for learning Blender. That's fine. Do the exercise anyway, because having a deep understanding of the reason for your goal is so important. It's honestly priceless. If you don't have a reason for any one of your goals, you may as well just delete it. But having these goals alone isn't enough. Like, how do we get from here to there? Well, this is where we move to stage 3, action plan. Simply put, this is just planning the path to achieving the goal. What do you need to do in order to get there? For me, I'm trying to animate characters. So the easiest thing to do is just work backwards and figure out each major milestone. That's it. Stage 4, deadline. This is exactly as it sounds. Setting a deadline for these goals not only creates this sense of urgency, but it also helps you build out a timeline. This way, you're not going to take like 15 years to do the goal. Plus, you also get to see where you should be at any given time. Stage 5, review. Every goal on your list probably isn't equal. And there may be some that are just straight up not even goals. Like for वैसे डेडलाइन और जो रिव्यू का ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेडलाइन स्पेशली आई थिंक कि हम लोगों को मुझे ख़ास तौर पे डेडलाइन सेट करनी चाहिए क्योंकि ये मैंने किया नहीं हुआ था दिस इज़ समथिंग न्यू आई विल जस्ट पिक अप माय कैलेंडर और मैं अपनी डेडलाइन एक रखूँगा जो कि मेरे सामने एनी टाइम रहेगी और सामने रखने का मतलब ये है कि आई वांट टू नो कि मैंने ये गोल सेटअप किया है और मुझे इसको फॉलो अप करना है और इतने टाइम में मैंने एटलीस्ट इतना काम और इतना सीखना है
तो क्लियर गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद हम लोग की ना सीखने की वजह यही है कि हमारे पास डेडलाइन नहीं होती। हमारे पास डेडलाइन ही नहीं होती कि हमने 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये काम सीखना है, बाद तक काम सीखना है, क्योंकि हमारे पास डेडलाइन नहीं होती। हम उसको जो है वो डिले करते जाते हैं, बहुत स्लो सीखते हैं और बहुत टाइम लेते हैं, और फिर हमारे ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि हमने ये टाइम में काम करना है। तो गिव योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डेडलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हम भी सेट करेंगे, और देखते हैं कि हमारा कितना टाइम गोल आता है। और मैं इस पर कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा पिक्चर बना के कि मैंने अपना डेडलाइन कितनी सेट की है और कैसे सेट की है। तो यू जस्ट हैव टू जस्ट फॉलो मी एंड वी विल नो हाउ लॉन्ग वी विल टेक टू गेट टू आवर गोल। For example, learn Blender's user interface. You can do that in under an hour. Our goals shouldn't be these meaningless tasks, but they also shouldn't be these insane, unachievable ones either. This stage is all about यस मैं आपको एक और बात मैं बार बार पॉज कर रहा हूँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि I had set some unachievable goals और that's why I quit a lot of things. जैसा कि मैंने डिजिटल आर्ट सीखने की कोशिश की, मैं बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ टाइम मैंने सीखा उसको, बट अगेन नो डेडलाइंस एंड नो सेंसिबल गोल्स। तो मैंने इतने जो है ना वो मिजरेबल प्रोजेक्ट्स पे काम किया कि वो मुझसे हो ही नहीं सके। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट क्विट इट। और द रीज़न आई क्विट इट बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी कि मैं वो नहीं करूँगा डिजिटल आर्ट, तो आई विल लूज समथिंग बिकॉज माई मेन प्रोफेशन इज़ वीडियो एडिटिंग जो मैं करता हूँ। बट आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स लाइक कलर्स एंड हाउ टू मेक अ सीन इन डिजिटल आर्ट, जो कि मेरी वीडियो एडिटिंग को इम्प्रूव कर सके। तो मेरा सीखने का जो मकसद था डिजिटल आर्ट को, वो एंड अगेन वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड था। तो वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड से ही वो मैं कर रहा था। तो इवन इफ आई क्विट इट डज नॉट इफेक्ट मी, बट आई स्टिल थिंक दैट कि मेरे जो गोल्स थे वो मैंने बहुत हाई अप सेट कर दिए थे और मेरी डेडलाइंस भी नहीं थी, और इस वजह से शायद मैं जो है वो डिस्पेयर में चला गया और मैंने क्विट किया। क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई थिंक मुझे अगेन इसको स्टार्ट करना चाहिए, डिजिटल आर्ट को भी और 3D मॉडलिंग को भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर दिस वीडियो वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और कैसे चैलेंज हम कर सकते हैं अपने आप को, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ गिविंग सो मच ग्रेट एडवाइस। reviewing and adjusting your goals regularly. I'm talking like once a month. So doing this not only makes the goal easier, but it usually makes it faster to achieve as well. That's the super quick rundown on setting your goals. But there's actually a second method that I think is way better. It's called the habit stack method. And once you understand how it works, it's mind-blowing. Let me give you an example. Two animators set up two identical goals. They have 1 month to complete and showcase their work, and they're at the same skill level. The first guy knows exactly how long each goal will take and sets aside 1 day to crush them. Whereas the second guy, he sees the goals differently. Instead of stacking up 1 day to get the work done, he works on them every single day. At the end of the month, they both meet up to show their work, and the first guy is tired and confused. He's got 2 animations, but this guy has 5. Do you see what I'm saying? Not only is this guy's work going to be better, but his skill and goals are going to exponentially increase. This is the habit stack method, and it's just a simple mindset shift. If you change the definition of your goals from outcome to activity, it's almost impossible that you're not going to reach your goal. Because think about it. Your goal is just an output that happens after a certain amount of inputs. And if you're inputting every day on repeat, this causes 3 things to happen: skill increase, goal achievement, and a killer habit. It's super simple, and the reason I like this option way more is because the tracking is night and day. Did you or did you not animate in Blender today?
If the answer is no, then you're not hitting the goal. And if the answer is yes, you're hitting it. I'm just realizing now that this video is weirdly philosophical. And if you're still watching, ये बहुत ही अच्छा इसने पॉइंट हमें नोट आउट किया है कि यू हैव टू बी कांस्टेंट और आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी क्योंकि आई थिंक आई मिस दैट काइंड ऑफ थिंग और मुझे यही चीज़ अब सेट करनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू सेट नाउ इज़ how to do work on my blender projects every day क्योंकि every day नहीं भी तो one after another day but because मेरा काम ऐसा है कि मुझे थोड़ा और टाइम भी चाहिए होता है और कोशिश यही करनी है कि at least 2 to 3 hours हम blender पे spend करें. मैं साथ में वीडियोस भी बनाऊंगा. दिस विल इम्प्रूव आवर सेल्फ और कोशिश हम यही करेंगे कि यार वीडियोस को सिंपल रखें क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस बनाना और उसको एडिट करना फिर उसको जो है वो पोस्ट करना दिस आल्सो टेक टाइम. So I don't want to go in depth or I don't want to make goals which I cannot achieve. So I will just go simple and I will try to just do everything I can to meet my own goals. जो कि डेली का एटलीस्ट एक मॉडल बनाना हम ये गोल सेट करेंगे और सारी चीज़ें राइट डाउन करेंगे और उसके बाद फिर इस पर एक वीडियो बनाएंगे. तो ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हमें गलती से मिल गई है तो हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे. congrats, because now we're getting to the fun stuff. We've got our foundation built, our puzzle piece map is complete, now we just need to follow it. And we do this with level 2, Enhance. This level is all about how to actually learn Blender. No, I'm not going to list up hundreds of different YouTube channels that cover a wide range of topics and skills with no actual guidance or meaningful discussion to help you. I did that last year. Instead, I'm going to go through the specific systems, frameworks, and tools that I would use if I started again. And step 1 is maybe my favorite system for learning anything. I've learned more using this system than I did throughout my entire bachelor's degree. So, what is it? Step 1, play. Blender, the program itself, is inherently boring. Like, it's hard to look at this screen and think, and it gets worse when you actually start using Blender, because most of the tutorials look and sound like this. Hey guys. So So true bro, so true. मैं कल वीडियो देख रहा था और मैं उस चैनल को मेंशन नहीं करना चाहता बट ओह माय गॉड ही मिस सो मच पॉइंट्स और मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई कि यार अब ये क्या करना है. जिसने पॉइंट ही मिस कर दिया, कट आउट कर दिया. अब इसने आगे क्या किया, 1-2 पॉइंट्स बीच में उसने मिस आउट कर दिए, उसने कट आउट कर दिए, उससे शायद गलती से कट आउट हो गए बट इट रियली गिव मी हेडेक बिकॉज वो बहुत ही अनकम्प्लीट एक ट्यूटोरियल था और उससे यार मैं कहता हूँ मुझे इतना गुस्सा आया ना. मैं कहा यार ये क्या बंदा कर रहा है, अभी एक ट्यूटोरियल बना रहे हो भाई, थोड़ी देर बैठ के खुद भी देख लो यार मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है, उसको दोबारा से ऐड करो किसी तरीके से. क्योंकि हम देखने वाले हैं, हमें तो पता नहीं है यार ब्लेंडर है क्या चीज़, इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ से कौन सा टूल निकलेगा, इसने ये स्टेप कैसे लिया. सो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ. फिर मैंने उसको ड्रॉप किया क्योंकि एक स्टेप जो था वो उसमें मिसिंग था और वो शायद इतना इंपॉर्टेंट स्टेप था कि अगर वो नहीं, मतलब वो एक डिज़ाइन बना रहा था वो उसके अलावा हो ही नहीं सकता था. वो बार बार वही चीज़ यूज़ कर रहा था बट समझ नहीं आ रही थी वो कैसे यूज़ कर रहा था. तो आई जस्ट हैड टू ड्रॉप दैट. और ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको ट्यूटोरियल्स ऐसे ही मिलेंगे. तो डोंट गेट सो हाई होप्स बिकॉज you think that there are YouTube channels who are teaching you, but I think they are inconsistent और आपको वो चीज़ नहीं बताते जो चीज़ आपको शायद आप एक कॉन्स्टेंट तरीके से लर्न कर सकते हो. और काफ़ी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जो कि एक जो ट्यूटोरियल बना रहा है उसको वो चीज़ें शायद इजी लगती हों बट अगेन जो व्यूवर्स होते हैं वो बिगिनर्स होते हैं तो दे कैन नॉट फॉलो अप दैट काइंड ऑफ स्टेप्स. और छोटी सी मिस्टेक या फिर छोटी सी वो जो है वो
ओवरलुक करते हैं कोई भी ऐसा स्टेप, तो दिस आल्सो यू नो लाइक मेक अस थिंक दैट वी कैन नॉट मेक दिस बिकॉज, और ये बहुत ही आपको डीमोटिवेट भी करती है। तो आपको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि आप जिसका भी ट्यूटोरियल देख रहे हैं दे आर वेरी लिजिट, और लिजिट मतलब ये नहीं है कि वो कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, मीन्स कि वो बहुत ही केयर के साथ हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एज अ बिगिनर यू शुड जस्ट pick up some channels which are very beginner friendly, not you know like intermediate or a professional level. So beginner friendly channels को follow up करें और उनसे ही सीखें, क्योंकि because I think जो कल मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, और this will demotivate you somehow। और शुक्र है जो कल मैंने जो थोड़ा सा पहले मैंने वीडियोस देखी हुई थी, मुझे बेसिक नॉलेज थी, और मैंने फिर ये स्वॉर्ड बनाई, और वो बहुत सिंपल स्वॉर्ड थी, इसमें कुछ इतने खास स्टेप्स नहीं थे, तो दैट्स व्हाई। So what do you do when the only option to learn is borderline torture and the only alternative is to spend thousands of dollars on courses? Well, I reckon I found the solution. And it happened while I was doing the most boring activity I can think of. Chess. This monochrome checkerboard is the pinnacle of boredom for me. I could do literally anything else and have fun. Anything. I'm watching paint dry. But in 2020, something insane happened across the entire globe that I don't think anyone was ready for. Chess became mainstream. Massive streamers started playing. No, I did miscalculate. Huge tournaments were being held. Holy shit! Wait, what the fuck? And to top it off, Netflix dropped this banger TV show. It was all anyone could talk about. And one day, I found myself logging into chess.com. And this is where everything changed for me. Instead of a boring checkerboard, I had an exciting game. Achievement unlocks, sound effects, trophies, leaderboards, daily challenges, league points. League points? This was amazing. Complex problems and learning was no longer boring to me. I wasn't running away from this. I was actually seeking it out. The reason I'm telling you this story is because this step is all about play, and this system is called gamification. Now, obviously, chess itself is a game, and I'm still really bad at it. Like, please don't look at my games. Holy shit. But we can use this gamification system for Blender. And trust me when I say, it'll make the learning process actually fun. Okay, but like, how do I do that? Like, how do I make Blender into a game? Well, it's actually a pretty simple process, and it's done in 2 stages. Stage 1 is create. We want to build a game that would actually be fun to play. I'm talking XP, level ups, achievement unlocks, and we do this by setting up a simple structure like this. Each box represents something different. One for habits, one for daily tasks, one for major goals, and one for rewards. All you need to do now is fill these out. And because we have our map from level 1, we can basically just copy paste a lot of this stuff into it. So for example, my boxes would look something like this. And if I reach a goal, I'd get a set amount. Study animations, open Blender. Daily anime practice, animations I mean. And work through COM, exercise, animate custom, run cycle, learn principle of animation, previous short film. PC upgrade. Yeah, reward is good. The goals are also very complicated, which we don't know. और टास्क अच्छे हैं, मतलब ये अच्छी हैबिट्स और अच्छे टास्क बनाए हुए हैं इसने खुद के लिए, और we should follow these kind of stuff, you know. We should. Amount of XP and gold. Or if I do a habit like open Blender, I get an XP point. Okay, but like, how do I use this? There's no character, XP levels, visuals. This is just a fancy to-do list. There's no game here. Well, that's the problem. You can't actually make Blender a functioning game without having something that speaks to it. It's not a game engine. But I found the game engine that does this. It's called Habatica. It's completely free, and it does everything in stage 1, but for real.
There's character creation, level ups, achievement unlocks, sound effects. You can even buy weapons, party up with people, complete quests. There's a pet system. This is literally a video game for Blender. Just for fun, I've made a party, so if you want to join me on some quests and learn 3D while doing it, you can. This system of gamification is priceless. And if I had it from the beginning like you do, I think this will complicate our things. और आपने अगर राइट डाउन करना है तो आप बुक्स पिक भी कर सकते हैं. आप वेबसाइट उसने बताई है और वेबसाइट होगी ये. तो हम इस पर क्लिक करते हैं और वेबसाइट पे ऊपर चले जाते हैं क्योंकि यही वेबसाइट है वो जो यूज़ कर रहा है और उसने बताया है यू नीड परमिशन. ओके, आई नीड परमिशन, आई नो. बट हम सिर्फ वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं और वेबसाइट ओपन करने के लिए आप सिर्फ ये भी सर्च करोगे तो आपकी जो है वो वेबसाइट निकल आएगी. उसने वो अपनी पार्टी का दिया हुआ है और आपने अगर गेमीफाई योर लाइफ, दैट्स अ रियली कूल स्लोगन. आई थिंक गेमीफाई योर लाइफ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और इस पे साइन अप कर लेते हैं. वैसे देखते हैं इसमें क्या होता है और इसको साथ साथ देखते हैं क्योंकि अभी हम साथ में वीडियो भी देख रहे हैं तो वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सिर्फ अपनी वेबसाइट्स और अपने जो है वो हैबिट्स बताने लग गए तो. it would have saved me so much time. Holy shit. Now that we know the fun way of learning, we actually want to learn. Because this whole system is kind of pointless if we don't put it into practice. And these next 3 steps are exactly how I would approach learning if I had my gamification and foundation in place. So, what are they? Step 2, advance. This step is officially when we can start learning Blender. And since we have this insanely solid foundation, we should know exactly what we need to learn. But there's one massive problem for this section of the blueprint that I think a lot of you will face. And the easiest way for me to explain this is with Skyrim. When Skyrim came out, I spent an unhealthy amount of time playing it. I'm talking 12 hours every day. It was like an IV drip of pure dopamine, and my 15-year-old brain was loving it. But one day, I wanted even more fun. And I found this video, an infinite power glitch, and oh boy, did it do just that. I was one-shotting giants, dragons, the literal final boss. This was incredible. For about a day. Because to quote the video itself, this ruined the game. This is exactly the same for Blender. Rushing the learning stage and trying to find cheap tricks to look like a pro, it's not going to end well. There are no shortcuts. Trying to do this will ultimately ruin the game. Because if we try to rush the process, or worse yet, cheat the system, one of 2 things will happen. You'll burn out or you'll quit. That's why this step is called advance. ये चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस की है. जब भी आप एसेट्स यूज़ करते हो, प्री-बिल्ट एसेट्स फ्रॉम ब्लेंडर किट, you feel like your project is not complete. You know, like it's not a good thing to use assets. और मुझे लगता है कि मुझे ये स्टेप फॉलो करना चाहिए. कुछ भी हो जाए, अपने एसेट्स बनाने हैं, चाहे यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के बनाऊँ या फिर ब्लॉग्स रीड करके बनाऊँ, कोई कैसे भी बनाऊँ, बट आई विल मेक माई ओन. और कुछ भी चीज़ हम ब्लेंडर किट या फिर 3D एसेट्स से अब नहीं यूज़ करेंगे. तो वी विल गो हार्ड वे, लिटिल हार्ड वे, नॉट so much hard way, because I don't want to put myself in a situation where I think it's just so much and I cannot do. ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना जो I think I cannot do, और वही प्रोजेक्ट करना है I think I can do but will be little hard. और उसको अचीव करने के लिए हम ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इजी मोड पे जाना है. ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ इजी मोड नहीं जाना, ठीक है ना. सिर्फ ओनली यू सेइंग दैट you want to just do something which you can do but you will not learn something new. What I mean is कि आपने प्रोजेक्ट का स्कोप इतना बड़ा नहीं रखना कि you cannot do. मतलब आप कर ही नहीं सकते, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है. आपको 1 महीना चाहिए वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए. आपने 1 महीने का उसको टास्क दे दिया, फिर आप उस पर बैठ के काम भी कर रहे हो 1 महीने तक,
पर आपसे वो प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, मीन्स कि आपकी कैपेबिलिटीज़ के बहुत ज़्यादा ऊपर है. You just have to select like a medium के आपने यहाँ से यहाँ तक सिर्फ जाना है, यहाँ तक नहीं जाना, क्योंकि यहाँ तक आपने अगर अचीव करना है तो आपको स्किल्स यहाँ तक चाहिए एटलीस्ट. तो यू गेट माई पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो है ना वो प्रॉब्लम ही हमारी यही है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो हाई एंड अपने गोल्स रख लेते हैं, फिर उनको फॉलो अप नहीं कर सकते. We don't want to blitz to the end and pretend like we're a pro. We want to advance through the stages of our goal so that we can become the person who can achieve that goal. Do you see what I'm saying? For this stage, since it is all about first steps with Blender, I'd spend some time doing the absolute fundamentals, preferably in this order: Blender basics, niche fundamentals, intermediate concepts. And after about a week of initial Blender experience, I'd look at my goals and see if my path needs to be adjusted. Every week following that, I'd do it again. And around this point in the process, your path should be really solid, which means we're ready to learn the next concept in the blueprint. And that is Step 3, side quests. Now at this stage, if you're 2 to 3 months into your learning journey, tutorials become boring. There's no creativity. You're just following steps like a factory line. Sooner or later, you're going to want to put your skills to the test and step outside your comfort zone. No more mindlessly watching how to make animation 10 times easier. So, there you go. ये चीज़ मुझे देखनी है कि यार ये क्या बोलता है, क्योंकि this point is important for me because ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैं फील करता हूँ जब मैं कुछ भी सीख रहा होता हूँ. तो let's see. How do you break out of this cycle of watching and copying? Well, it's kind of like side quests in Skyrim. Nothing? Just do it. In Skyrim, our map has a beeline directly to the main quest. But every now and then, there's these smaller quests that pop up, and they usually lead to these little caves on the side of our path. If you accept the quest and complete the cave, not only do you get some XP, but you also get a bunch of items and rewards at the very end. These caves are like weekly projects, and doing them is so powerful. Because you don't just get a sweet project once complete, you also get to learn a ton of new stuff while you're doing it. Okay, but this isn't Skyrim. No one's just going to give me weekly projects to do. You're right, and choosing them will ultimately depend on you. So instead of doing your daily practice, take a week and switch it up to a larger project based around the stuff you know. For example, you've probably seen one of these videos where I make a project in 24 hours. The concept is stupid. Do not do this. But choosing these 3 projects was actually super similar to the way I do it for a weekly one. It literally takes 3 steps. Find a subject, use it with your niche, and give yourself a constraint. This combination limits what you can do because, I mean, you got a week. It's not a lot of time. But having this combination is actually what allows you to do the project in a week. If you're really struggling to figure out what you want to do, just steal some ideas from a community Discord and match it to your niche. Kaizen's got a monthly prompt. Clint has a weekly one. There's so many ways to do this. The main thing is to just do the project with the skills you have. Problem solve as you go, and only watch tutorials if you really need them. Trust me, I literally learned the concept of a null object in this video all on my own, and I will never forget it. Now we can move on to the final step in level 2, the pinnacle of learning Blender and potentially the most powerful concept in this entire video. So, what is it? Step 4, synergy. At this stage, we've got all these core concepts down and we should be pretty deep into our map. But now the problem becomes, how do we close this remaining gap between here and our goal? The pathway is shorter, but the challenges are way harder. Well, the answer is skill trees. Please hear me out. In Skyrim, there's loads of different skills that you can level up as you play the game. Once you get enough XP and reach a certain level, you can open the skill tree and unlock perks. These are like upgrades, and they make the overall skill way stronger, which ultimately makes everything else
way easier. Instead of running head on into a giant camp and getting yeeted into the stratosphere, I can take a step back, learn stealth, and literally one-shot them. This is the concept of skill stacking, and it's one of my favorite things to do and talk about, because it essentially lets you close this remaining gap with just a few moves. Let me give you an example. Two animators are trying to join a lead animation studio. They both have the same experience, projects, and they apply at the exact same time. Both are identical on paper, but once they submit, who do you think is going to get the job? Obviously this guy, and it's simply because he skill stacked. Both of these animations are literally the same, but because one of them had great lighting, compositing, and rendering, it's an instant win. And to be honest, the other guy probably didn't even get looked at. The point I'm trying to make is having a synergy of skills is invaluable, but all of this is meaningless if you don't know where to start. We already chose our skill tree at the beginning, and all these other ones have like 0 XP in them. How do we level them up? Well, wouldn't it be nice to actually have a specific skill tree? One that you can open up and follow for modeling, texturing, and animation? Yes, yes it would. And my friend Derek actually made one recently. This guy is a freelance pro. He's working with massive brands, but he's also got 5 original classes on Skillshare, and they're basically a mini skill tree. This learning path jumpstarts your modeling, texturing, and my favorite, animation. He walks you through everything you need to know about animation in under an hour. Plus, since this is Skillshare, if you want to learn other stuff like sculpting or even some of my classes, you can. Because Skillshare has literally thousands of classes made by industry pros on things like cooking and animation. It's awesome. This video is sponsored by Skillshare, obviously. But if you're one of the elite 30% of people watching this right now, you can get all of this for free because Skillshare has hooked me up with an amazing offer for you. The first 500 people to use my link below will get a 1-month free trial of Skillshare. It's limited to 500 people, so if you missed it, sorry. But in all seriousness, clicking that link really does help support the channel, and it lets me do this whole YouTube thing for you for free. Click the link below, and thank you to Skillshare for sponsoring this video. Level 3, Thrive. Having these core concepts and frameworks is amazing, but to actually become a pro, we need to do more than just put it into practice. We need to show it off and build something for ourselves. And this is exactly what step 1 is all about. Building a name for yourself online, especially as an artist, isn't easy. Whether it's getting discovered or even just posting your work, it's kind of scary. But doing this exercise of showing your stuff online is one of the best things you can do to increase your skill. Let me give you an example. 2 artists meet up to show each other their latest piece. This is their magnum opus, and they've worked on this for over a week. Artist 1 says, "Hey Smeaf, great artwork. What do you think of mine?" Artist 2 says, "Hey Smeaf, great artwork. What do you think of mine?" He's speaking to a mirror. Without showing your stuff, you're essentially in an echo chamber, and this does way more harm than good. I'm speaking from experience. Look at these renders of mine. These are objectively shit. You can ask anyone. This is clearly amateur work. But if I sat in that echo chamber and told myself it was good, I'd never grow as an artist. And honestly, I'd probably still be in there. This is ये बहुत ही एक अच्छी एडवाइस है और आई थिंक दैट पीपल शुड फॉलो कि आपने एक अपना इन्वायरमेंट अपनी जो कम्युनिटी में जो काम है आप अपना शो करें जस्ट लाइक आई डू और आप भी मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी बनाता हूँ जो कुछ भी करता हूँ आई ऑलवेज शेयर ऑन लिंक्डइन। एट लीस्ट मेरे पहला जो अकाउंट था वो बंद हो गया फॉर सम रीजंस और ये मैंने न्यू अकाउंट बनाया बट आई स्टिल शेयर थिंग एंड टू और ये जो मैंने आप उस दिन ये 2 दिन पहले की मैंने कार मॉडल की थी और इट वाज गुड आई थिंक और
आई थिंक गुड इनफ कि इतना अच्छा भी नहीं था, बट आई थिंक इट्स ओके। और कमेंट भी आ गया था एक, और बहुत अच्छी बात है कि एक कमेंट भी आ गया हमारे पास। और दूसरा जो हमने काम किया, वो जो भी हम करते हैं वो इधर हम अपलोड कर देते हैं। और आप मुझे मेरा काम जो भी है वो आप देख सकते हैं। आई पोस्ट ऑलमोस्ट डेली, और डेली पोस्ट करके हम ये चीज़ें बनाते रहते हैं। तो ट्राई न्यू थिंग्स और क्रिएटिंग न्यू थिंग्स इज़ रियली लवली फॉर मी, बिकॉज आई थिंक यही तो इंजॉयमेंट है, और यही चीज़ जो है वो मज़ा आता है काम करने का, और फिर कुछ करके दिखाने का। ठीक है, विदाउट गोइंग टू कम्युनिटी, आप जब कम्युनिटी को शेयर ही नहीं करते अपना काम, आप ओपिनियंस नहीं ले सकते कि हाउ वाज योर वर्क। जब आप ओपिनियंस नहीं ले सकते तो दैट वर्क विल बी आई थिंक just good for you because you think that it's good, but what community and what other people say, you don't know, because you are just isolating yourself, और आप एक ही बस कॉर्नर में बैठे हुए हैं और आप वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, और बाकी आपको परवाह नहीं है। मतलब यू विल नॉट इम्प्रूव। आपको फीडबैक लेना चाहिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। I think negative feedbacks are way better than positive feedbacks, because negative feedbacks आपको कुछ ना कुछ जो है वो सॉरी मैं वो वर्ड ही भूल गया। बड़ा एक अच्छा वर्ड था, बट आई जस्ट फॉरगॉट दैट वर्ड, जो कि मेरे भी माइंड में है, बट मैं फॉरगॉट कर गया। बट चलो वीडियो देखते हैं, शायद समझ में आ जाए। आपने कभी भी जो है ना वो बैड कमेंट्स को, जो आपकी जो रिव्यूज़ होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना, और ऑलवेज अप्रिशिएट करना है। दिस विल हेल्प यू। So important to do. And if you're afraid of posting, just do it under a fake account. It'll get you comfortable with doing it, and you can always just change the account in the future. So now we know why to post, but how do we build our name? Well, it's the same way you build out an art gallery. If I walked into the Louvre Museum and saw this next to the Mona Lisa, someone's getting fired, okay? We want to treat our professional portfolio with curated, polished pieces. Not this. So now I'd set out to make 3 to 5 of my best pieces and showcase them in my portfolio. These should be high-lift projects that showcase your skills to the best of your ability. You can host your portfolio on something like Squarespace or Behance. It doesn't really matter. So now that our online foundation is solid and our portfolio is sorted, we can move on to step 2, evolve. At this stage, our map should be pretty much complete. But just like Skyrim, it can get kind of boring if all you're really in it for is the story. You complete the thing and then you just turn it off and forget about it. Remember that trap I mentioned in level 1? Once you're in this stage of the blueprint, you're technically in another trap. And it's this peak here. We've successfully climbed out of the first trap, but now we're in this weird intersection where our progress plateaus. So what do you do when you don't know what to do? Well, I think I found the solution. It's a secret system that every one of the big 3D creators are using right now, and it lets them upgrade their skills infinitely. It's called the Forge system. Anyone can do it. It's 5 steps, and it looks like this. Step 1 is find. When we find something new in 3D, it's pretty common that you want to try it out. This step is all about that. All you got to do is find or learn a new method that lets you create something awesome. That's it. Step 2, operate. With this newfound knowledge, we want to now create the thing. And it could literally be anything. Maybe you learned that you can create simulations with null objects, like me. Whatever it is, take some time to create it, because now we want to show it. In step 3, reveal. We already know showing our work is super important, but doing this with the Forge system is completely different. We're not looking for pity likes or followers. We're looking for specific feedback, usually along the lines of, "Oh my God, how did you do that?" The moment you see this, or even if you don't, it's time to initiate step 4, grow.
This is where everything comes together. With our new creation, we want to break it down and explain exactly how we did it. Again, we're not doing this for attention. We're doing this to solidify the new technique and grow our skill set. If you can't explain a method or concept easily, it's probably because you don't understand it yourself. So doing this actually forces you to learn it, and it's weirdly addictive. Step 5, evolve. Now that we've done this once, all we want to do is quite simply repeat. This concept and system is incredibly powerful. And I don't know if you've spotted it yet, but this is actually a flywheel. Each action feeds into the next, which creates this amazing loop effect of endless learning. And don't take my word for it. Look at all these huge creators who are actively doing this. If you strip this thing down, it's really just a method of teaching. And honestly, it's one of the most powerful ways to actually learn. Now look, I get it. It's not easy to do this. And it wasn't for me at the start either. If you're more of a shy guy, you can take the alternative route to teaching, like Twitter threads with in-depth breakdowns, Instagram carousels, or dare I say it, text-to-speech AI. Hey guys, welcome to my Blender channel. Wait, what? Wait, no, that's definitely not supposed to be in the script. Now, let's be real for a sec. This blueprint isn't perfect. It skips a lot of steps, and there's no exact instructions. But genuinely, following this guide from day one would have changed my entire life. And I know for a fact it can help you too. Now you might be asking, Smeaf, what about this last step? Well, I saved this one for last because it's the biggest problem I see 3D artists make when trying to monetize their work. And if you want to actually make money with 3D, you'll want to watch this video right here. अच्छे स्टेप से इसने बहुत ही डिटेल के साथ बताया कि आप कैसे अपनी जो लर्निंग जर्नी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे लर्न कर सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट कैसे जो है वो ऑन पॉइंट रख सकते हैं, एंड अगेन आप उससे कैसे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं. आई विल शो यू हियर. इफ़ यू सी हियर एवरीथिंग इज़ क्लियर. आपने पहले अपना जो है वो नीश सेलेक्ट करनी है, फिर आपने उसको जो है वो असेस करना है, फिर आपने एक गोल बनाना है, फिर उस गोल की आपने डेडलाइन देनी है, फिर आपने जो है अपनी हैबिट्स, अपने जो है वो रिवार्ड्स और अपनी जो है वो टास्क को क्लियर आउट करना है, फिर आपने नई चीज़ें सीखनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है. मीन्स कि आपने जो है वो ये जो सारी चीज़ें हैं आपने करनी है, और ये एक तरीके के साथ होंगी, क्योंकि आपको जब तक अपनी नीश नहीं पता होगी, आप फर्स्ट स्टेप से आप थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट गुड. सो यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स. और ये कोई इतने बड़े रूल्स नहीं है कि आपने डेली इनको फॉलो अप करना है. नो, यू जस्ट हैव टू मेक अ माइंड सेट वाई you want to use this and what is your niche, why you want to use Blender, why you want to create, and what is your niche. ये आपने अपने माइंड में क्लियर आउट कर लेना है कि why you want to do that. Then you just assess the points like what is a goal of this all this process, कि आपने ये जो niche आपने select की है इसका गोल क्या है. वो जब आपका गोल क्लियर आउट हो जाएगा, आपका सारा चीज़ें जो है वो क्लियर आउट होके बाहर आएंगी, तो they will give you a much clear goal of yours. आपने क्या बनाना है, क्या करना है, आपने किस चीज़ को फॉलो अप करना है, वो आपका क्लियर होगा. ठीक है ना, आप उस चीज़ पर फोकस कर सकेंगे बाकी चीज़ों को इग्नोर करके. तो थर्ड चीज़ जो मैप आपने बनाना है कि यार हमने जाना कैसे है उधर से उधर तक, मतलब हमने ये स्टेप बाय स्टेप करना है. उसके लिए आपको गोल चाहिए होगा. ठीक है, आपने गोल्स करने हैं सेलेक्ट, अपने अपना जो है वो एंड डेट सेलेक्ट करनी है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने 1 महीने में 2 महीने में ये नीच पे इतना काम करना है. और ये चीज़ जब आप इसके साथ मैचअप करते हैं, मीन्स कि आपने ये टास्क है आपका जो कि आपने 1 महीने में कंप्लीट करना है, आपने ये हैबिट रखनी है और आपने अपने आप को ये जो है रिवॉर्ड देना है. ठीक है ना, आप अपने आप को इतना कंफ्यूज इस वीडियो में नहीं करें. आप सिंपल इसको आर्ट से लें कि आपने पहले नीच सेलेक्ट करनी है, फिर आपने उस नीच को जो है वो क्लियर आउट करना है कि इसका जो मेन चीज़ है वो क्या है जो मैंने सीखनी है,
वो पता चल जाए। आपने एंड में अपना एक डेडलाइन रखनी है, डेडलाइन रखने के बाद आपने जो है वो अपने जो है वो उस पे काम शुरू कर देना है, ठीक है। और रूटीन के साथ करना है, दिस इज़ मच बेटर दैन डूइंग इट रैंडमली। आपने रूटीन के साथ काम करना है। फिर आपने जो चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों में आपने अपनी स्किल्स को देखना है कि कौन सी चीज़ें मैंने सीख ली हैं, उनमें अपने आप को अपने एक अलग से प्रोजेक्ट्स करने हैं जो ट्यूटोरियल बेस पे ना हो बट अपने हो। मीन्स आपने खुद बनाने हैं अपने लिए, या फिर अपनी जो है वो नीश के उस नीश के मुताबिक अपनी जो है वो एक प्रोजेक्ट्स बनाना है जो आपने स्किल्स ले ली हैं, उस पर प्रोजेक्ट बनाना है, इम्प्रूवमेंट करनी है। आपने देखना है कि कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट करें, सीखें और ये चीज़ें रिपीट करें, आपको अच्छा प्रोसेस मिलेगा। ये चीज़ें इसने सारी कंप्लीट बताई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो है। आपने अगर ये स्टेप फॉलो किए, मैं खुद स्टेप्स फॉलो करूँगा, मैं काफ़ी चीज़ें राइट डाउन भी अब करूँगा, और राइट डाउन करने के बाद हम कम्युनिटी पोस्ट भी कर देंगे और लिंक्डइन पे भी शेयर कर देंगे। फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, और मुझे आप यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी विल मेक वीडियोज़ लाइक दिस मोर एंड मोर, और आपको इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा, कुछ चीज़ें सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे। मैं खुद बिगिनर हूँ 3D में, सो वी विल लर्न टुगेदर, सो फॉलो अप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।